Now comparison between clay and sand. तो इसमें हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है? पार्टिकल साइज, टेक्सचर, यूनिफॉर्मिटी, void ratio, permeability, shrinkage upon drying, compression when the load is applied to the soil surfaces, cohesion, swelling, elasticity, specific surface, capillarity, appearance of particles, particle shape, surface tension, size of pores, expansion, compressibility, volume of voids, and capillary pressure. So, clay soil and sand. Clay soil का जो particle size है that is less than 0.002 mm and it is not visible by naked eye. Sand soil का जो part जो sand soil का जो size है वो है that is between 0.075 to 4.75 millimeter and it is visible by naked eye. Texture इसका fine है, इसका coarse है. Uniformity ये less uniform है, ये more uniform. Void ratio इसकी high है, इसकी low है. Because it is less uniform and it is more uniform. Permeability इसकी low है, इसकी high है, क्योंकि इसके जो capillary size है वो small है, इसका ज़्यादा. Shrinkage upon drying ये जब सॉइल ड्राई होती है, क्ले सॉइल जब ड्राई होती है वो काफी श्रिंक करती है, ये नहीं श्रिंक करती. कंप्रेशन व्हेन द लोड इज अप्लाइड टू द सॉइल सरफेसेस. कंप्रेशन जो है इसकी कंसोलिडेशन जो आस्ते आस्ते होती है, इसकी इमीडिएटली होती है. कोहेजन इसमें कोहेजन होती है, इसमें कोहेजन नहीं होती. स्वेलिंग इसकी स्वेलिंग होती है, इसमें स्वेलिंग नहीं होती. इलास्टिसिटी इट इज हाईली इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है. स्पेसिफिक सरफेस इसका ज़्यादा है, इसका कम है, क्योंकि जो मतलब इसका क्योंकि इसका वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो इसका ज़्यादा होता है, इसका वॉल्यूम जो है वो कम. तो देन कैपिलरिटी इसकी कैपिलरिटी हाई है, इसकी नहीं, क्योंकि जो कैपिलरिटी एक्शन मीन्स जो राइज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है थ्रू कैपिलरी पोर्स वो उसमें ज़्यादा होता है, इसमें नहीं. Appearance of particles. It's flexible, bulky and rigid. Particle shape. Particle shape इसके scaly like होते ही इसके angular है, rounded होती है. Surface tension. इसमें surface tension ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है. Due to intermolecular action and water present in the pores. Size of pores इसमें कम small होता है, इसका ज़्यादा होता है. Expansion. ये ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, ये नहीं एक्सपैंड करती. कंप्रेसिबिलिटी वेरी कंप्रेसिबल स्लाइटली, बिकॉज इसमें जो पोर्स के अंदर जो पानी होता है जब उसके ऊपर लोड डालते हैं वो पानी जो बाहर स्क्वीज आउट होता है, मीन्स जो कंसोलिडेशन होती है, तो इसलिए ये इट इज वेरी कंप्रेसिबल, इट इज स्लाइट. वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इसमें ज़्यादा है 98%, इसके 50%. क्यों? दी रीज़न की है. नंबर वन इट इज लेस यूनिफॉर्म. दैन सेकंड वन इज इसकी जो है कैपिलरी एक्शन जो है वो काफ़ी हाई है. ठीक है. दैन इसका जो साइज ऑफ द पोर्स है वो वेरी माइन्यूट है. ठीक है. एंड तो कैपिलरी प्रेशर मीन्स पोर वाटर प्रेशर इसका ज़्यादा है, इसका कम. Next is regional soil deposits of India. Based upon the climatic conditions, topography and geology of their formation, soils of India can be broadly divided into the following groups: marine deposit, laterites and laterite soils, black cotton soil, alluvial soils, desert soils, and boulder deposits. So, number one क्या है? Marine deposits. These deposits are found all along the coast in narrow beds. They are very short and may contain organic matter. They possess low shear strength and high compressibility.
Therefore, they pose a lot of problem as a foundation and construction. तो marine deposits हमको कहाँ मिलते हैं generally along the coast in narrow beds. So they are not suitable as a foundation and construction material. Laterites and lateritic soils. Laterites are formed by the decomposition of rock, the removal of bases and silica, and formation of oxides of iron and aluminium. Then presence जो lateritic soil है उसका कौन सा कलर होता है रेड और पिंकिश रेड कलर क्यों because it imparts because it have iron oxide and due to iron oxide the soil is of red or pinkish red color. Laterites are soft when wet but hardened with age. Such deposits occur in central, southern and eastern India. Laterites pose no difficulty as foundation material and retain their slopes well. उसके जो slopes जो है वो stable रहते हैं. There is continuous softening effect with depth and in some cases presences of warm holes in laterites need to be examined carefully. Lateritic soils, being residual soils, show variability in their properties depending upon the stage of weather. तो ये जो हमारे वार्म जोन है इससे क्या होता है कि हमारी सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है और सेकेंडली ये जो वार्म होल्स है जो कि अर्थ वॉर्म्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं इसकी एक और हेल्प हमें मिलती है कि अर्थ वॉर्म जो है वो जो हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिस्ट्रॉय करने में वो हेल्पफुल। तो वार्म होल्स के जो है वो इंडिकेट करता था कि इस सॉइल में अर्थवॉर्म्स है और जो जो अर्थवॉर्म करके जो सॉइल की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है सेकेंडली उसका नुकसान क्या है उसका नुकसान जो उसका नुकसान ये है कि जो उसकी जो स्पेस साइज है वो उसकी उसके दोनों तरीके से हमारा नुकसान है वो उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है और सेकेंडली वो क्या करता है जो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल है वो भी कम करता है इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। ब्लैक कॉटन सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है these are residual soil deposits formed from basalt or trap rocks. These are expensive soils. In India, they cover an area of 3 lakhs square kilometer, which extends over the states of Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Gujarat, and Uttar Pradesh. These types of soils contain clay mineral Mont Morillonite, which is responsible for their excessive shrinkage and swelling characteristics. Their shearing strength is extremely low. They are highly compressive and have low bearing capacity. However, such soils are suitable for growing cotton crop and that is why it is called as black cotton soil. Lightly loaded structures are more susceptible to damage as a result of volume changes in the soil. So under-rim piles are considered most suitable as foundation for houses and other light structures. These piles are taken to depths below the zone of seasonal variations in moisture. Alluvial soil. They are transported soil. A large amount of North India is covered with them. Thickness of these soil deposits varies from a few meters to more than 100 meters. They have
alternating layers of sand, silt, and clay. Such deposits also occur at some places in peninsular India. They are highly fertile but are generally a low density and are prone to liquefaction under earthquake shocks. Desert soil. Larger parts of Rajasthan, covering about 5 lakh square kilometers, consist of desert soils, which are wind-blown deposits of sand. They are formed under highly arid conditions. Sand dunes have an average height of 15 meters, but at times it can be higher also. Dune sand is non-plastic, uniformly graded, and highly pervious fine sand. This is generally loose conditions and requires desiccation or stabilization. Boulder soil. Boulder soil कहाँ मिलती है? River flowing in hilly terrains and near foothills carrying large boulders. Downstream, such flow makes deposits which contain large quantities of boulders. Such deposits are often found in the sub-Himalayan regions of Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. Their properties depend upon the relative proportions of boulders and soil. Shear strength of such soil depends. Shear strength of such soil deposits cannot be measured in the lab because soil samples of such soils can never be representative of natural deposits. On a large scale, बल्कि काफी काफी ज्यादा टेस्ट जो फील्ड टेस्ट हमें करने चाहिए are required which are useful to obtain data for design of foundation and stability analysis of slopes on such soils.